Good morning, students. Today we are going to discuss long answer question of chapter Animals, Habitat and Adaptation. In our previous class, we have discussed short answer questions. So, have you written those questions in your notebook? Yes, very good. You have to learn that also. Okay? So, let's start today's class, starting with question number 1. What all things does a habitat provide? So, what is the meaning of habitat? We have done that in our previous class. That habitat means the surrounding in which an animal lives. Okay? That is a habitat. So, what does, now today's question is that what does a habitat provide? What does it give to that animal? Answer. A habitat provides the living things food, water and the right kind of environment to live, grow and multiply. So habitat, that means the surrounding in which an animal lives, that is a habitat. So a habitat, it provides means it give the living things. Living things means the animal that is living in that particular habitat. It gives that animal food, water and the right kind of environment in which they can live, they can grow and they can multiply. Multiply here means to reproduce, okay, by either laying eggs or by giving birth. For example, let me tell you this by example. Fish lives in water, okay. So in water it is the water, in water a fish lives. So in that habitat it gets food, water and the right kind of environment. But if you take a fish out of water, then it will die. Okay? तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हैबिटेट जो है वो क्या प्रोवाइड करवाता है. हैबिटेट हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसकी डेफिनेशन को पढ़ा था कि हैबिटेट का मतलब होता है कि जो सराउंडिंग्स है जिसमें एक लिविंग थिंग या एनिमल रहता है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एनिमल की हैबिटेट हो जाएगी. हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है एक लिविंग थिंग को? तो वो उसको खाना देता है, पानी देता है और सही तरीके का वातावरण, एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण देता है जिसमें वो जी सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने काइंड को बना सकते हैं. ठीक है, बाई लेइंग एग्स, अंडे देके या फिर यंग वंस को बर्थ देके. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक मछली है वो पानी में रहती है ना. पानी में वो उसके लिए बिल्कुल राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है. पानी, उसमें उसको खाना भी मिलता है, पानी में मिलता है, वहां पे वो रह सकती है, बढ़ सकती है और मछलियों को पैदा कर सकती है. बट अगर आप एक मछली को पानी से निकाल दोगे तो वो तभी मर जाएगी, क्योंकि वो उसका हैबिटेट नहीं है और वो राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में उसके लिए नहीं है, इसलिए. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन एडेप्टेशन, गिव एन एग्जाम्पल. So in this you have to define the term adaptation. Answer. Any feature that helps an animal to modify itself in some way to survive better in the environment is called adaptation. So any feature, okay. So any feature that an animal that helps an animal, okay, to modify itself. So it can modify itself with that feature and it can survive means live better in that environment. So that is the called adaptation. For example, camouflage is an example of adaptation. Camouflage means that particular animal which show the adaptation of camouflage, it can change its color, either change its color or it have a particular kind of marks on its body, so that help it to merge with its surrounding. That is camouflage. So this camouflage protect them because it can hide from its predator. This also we have studied in short questions. Okay. So adaptation का मतलब कि कोई भी फीचर, ठीक है, कोई भी फीचर
जिससे कि एक जानवर अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, इस तरह से मॉडिफाई कर सकता है कि वो अच्छी तरह से जी सके उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रहता है। जैसे कि मॉडिफाई का मतलब बदलना, ठीक है, खुद को किसी तरह से ढालना। फीचर का मतलब जो उसकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। जैसे कि एक कैमिलियन है, गिरगिट, वो कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टी शो करता है। उसमें वो जो अपने कलर को बदल लेता है और अपने एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप हो जाता है ना। तो वो एक फीचर है जिससे वो अपने शिकारियों से बच सकता है और इजीली शिकार कर भी सकता है, क्योंकि कैमोफ्लाज की वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है। तो कैमोफ्लाज के बारे में भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था। तो कैमोफ्लाज भी एक एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बुक में, जैसे माइग्रेशन, ठीक है, हाइबरनेशन, ये सब, पर यहाँ पे मैंने कैमोफ्लाज का एग्जाम्पल आपको दिया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हु आर एक्वाटिक एनिमल्स, गिव एग्जाम्पल। सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर, एनिमल्स दैट लिव in water are called aquatic animals, for example fish, turtle, crab, etc. So in question number 3 you have to tell who are aquatic animals. Okay, so aquatic you can remember from aquaguard. Aqua means water, okay, water, aquaguard, from that you can easily remember this term aquatic. So animals that live in water, they are called aquatic animals. So you can easily tell any example of aquatic animals like fish, turtle, crab, okay, etc. तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक्वाटिक एनिमल कौन से होते हैं। तो जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि मछली, ठीक है, कछुआ, क्रैब का मतलब क्या होता है, केकड़ा, ठीक है। तो ये सब जो है एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि वेल है, डॉल्फिन है, ये सब भी एग्जाम्पल है। बाकी फिश की कैटेगरी में ही आप ले लो एक तरह से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन नेक्स्ट पेज, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू omnivorous eat? Name some omnivorous animals. So in this you have to tell what does omnivorous eat. Okay, so do you remember the 4 categories of this? Because we have divided the animals on the basis of their food habits, so there are 4 and one of them is omnivorous. So do you remember what do omnivorous eat? Yes. Now let's check the answer whether what you have thought in your mind is similar or to my answer or not. Omnivorous eat plants as well as flesh of other animals. Okay, so omnivorous they eat plant, so they can eat plant as well as they can eat other animals. They can eat flesh of other animals. Okay, for example dog, humans, bear, they all are some example of omnivorous animals. Why? Because for example we humans, okay, we can eat plants like fruits, vegetable, they all are in plant category, and we can also eat flesh of other animals like chicken, mutton, they all are came in this category, flesh of other animals. Okay, we can eat vegetarian food as well as non-veg food, so we are omnivorous. तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि ओमनिवोरस क्या खाते हैं और आपको ओमनिवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल भी देने हैं। तो ओमनिवोरस एनिमल्स किस कैटेगरी में बेस्ड है, आपको कुछ याद है जो आपने चैप्टर में पढ़ा था? जी हाँ, ये बेस्ड है फूड के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था 4 कैटेगरीज में, उनमें से एक था हमारा ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस जो है वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और वो दूसरे जानवरों को भी पकड़ के या उनका मांस, फ्लैश का मतलब उनका मांस भी खा सकते हैं, ठीक है, दोनों पे वो जिंदा रह सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग का दिया है, ह्यूमंस का मतलब इंसान, ठीक है, बियर का मतलब भालू, ये सब ऑमनिवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है। जैसे कि इंसान है, बहुत सारे इंसान वेजिटेरियन होते हैं और बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं इंसान और नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो वो ऑमनिवोरस की कैटेगरी में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन माइग्रेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो one of adaptation which is helpful to animal for their survival, which helps an animal to modify itself and it helps them to survive better in its environment. So let's define migration. Answer: migration is the movement of an animal from one place to another and then back again. So what is the meaning of migration? When an animal they move from one place to another, okay, during a particular period of the year and then they come back, okay, that is called migration. So many birds migrate. Do you remember why do they migrate? Yes, they migrate in search of better life, better, so that they can get better climate, good food, okay, that's why they migrate. And for example, birds, they migrate, okay, from very long distance. They come to a particular place and after a particular time, after that they will go back to their original place. So birds also show migration. So I hope you understood today's class. In today's class we have discussed total 5 questions. So please write this question answer in a very neat and clean handwriting in your notebook. Thank you so much. Have a nice day. Bye.